Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adarsh, where we are studying together, teaching and learning platform. So our today's topic is a very interesting topic, the universal common ancestor and tree of life. This universal common ancestor लाइफ कहाँ से शुरू हुआ है? आज हम जितनी वैरायटीज एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ स्पीसीज देखते हैं, क्या ये सारी जब इनका ओरिजिन हुआ होगा? क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम माइथोलॉजी से भी जोड़ करके देखते हैं, जिसमें आकाश पाताल और पृथ्वी तीन लोग कहे जाते हैं। तो कहीं ये तीन लोग थ्री डोमेन कंसेप्ट को तो नहीं सपोर्ट करते हैं लिविंग किंगडम के आज जो कंसेप्ट है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कंसेप्ट को जोड़ा जा सकता है। हाउएवर, हम यहाँ शुद्ध जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि लाइफ, जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लाइफ साइंस, तो वो लाइफ शुरू कहाँ से हुआ होगा? बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट एक कॉमन कंसेप्ट जो अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज द यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर concept of origin of life maybe, or origin of species may be considered as a very by four letters, that is the LUCA, the latest universal concept of life, that is called as LUCA, a single cell bacterium like organism that is the common ancestor of all life on earth. That is a related concept is also called as progenote. That this is the progenote is a related concept of LUCA. LUCA की तरह का एक प्रोजीनोट जीनोम से शायद जीनोम, दैट इज द डीएनए और आरएनए कंसेप्ट के एवोल्यूशन के पहले प्रोजीनोट की तरह लूका को कंसिडर किया जा रहा है, किया गया है। और इस लूका से आगे हम जो हमारा रिलेटेड टॉपिक है, ट्री ऑफ लाइफ, लूका के एमरजेंस या एक्सेप्टेंस के बाद लूका हम मान जरूर रहे हैं कि लूका फर्स्ट लाइफ होगा अर्थ पर, जिसमें जिसके इमरजेंस के पहले बहुत सारी चीजें हुई होंगी। अर्थ में कूलिंग हुई होगी, ओशन की बॉइलिंग, ओशंस कूल हुआ होगा, मून और अर्थ का अपीयरेंस हुआ होगा। उसके बाद किसी तरह से एक, अगर हम बहुत शॉर्ट में ये कहानी क्या है लुका के इमरजेंस की, तो कहानी वहां से बनती है कि बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हुए होंगे, केमिकल कंपोनेंट्स जमा हुए होंगे, और इन कंपोनेंट्स में से बाई चांस और ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंटल चेंजेस इस तरह के केमिकल्स कॉन्टैक्ट में आए होंगे जो प्रोटोप्लाज्म की तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए होंगे। या आरएनए के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, दे वुड हैव कम इन कॉन्टैक्ट, एक साथ इनका कॉन्टैक्ट बना हुआ होगा और उसके बाद इनकी पॉलीमराइजेशन हुई होगी और आरएनए और डीएनए के चेन्स बने हुए होंगे। बेसिकली ये कहा जाता है कि पहले आरएनए बना होगा और आरएनए के कंजर्वेशन से दो स्ट्रैंड्स एक साथ कनेक्ट हुए होंगे और डीएनए का इवोल्यूशन हुआ होगा, और फिर उसके बाद डीएनए के सेल्फ रिप्लिकेशन मोड या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एंड आरएनए रिप्लिकेशन से हेरिडिटरी मटेरियल बने होंगे, और उसके बाद ये हेरिडिटरी मटेरियल पास ऑन होने, इनहेरिटेंस, दे मस्ट हैव शोन इनहेरिटेंस, और इस तरह से एक कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर दैट इज द लूका that might have evolved a bacteria like structure, जिससे फ्यूचर में that we have seen here in this diagram, this is the leuca, this is the original common ancestor, जिससे this is the common ancestor that have given in a tree like manner that has been referred as the phylogenetic tree,
in this tree-like manner, this evolution must have been taken. This leuca has evolved. This is the node-like, internode-like structure. This is the common ancestor that has from which this is the internal node from where the divergent branches must have gone on three divergent line on three roots. One is bacteria, and the second is again a common ancestor that must have been divided into an archaea group, and on another divergent line, it is eukaryota group. This eukaryota has probably given rise to the eukaryotes or the multicellular organisms, and archaea. There was some confusion. It was archaea means the ancient. So one view was that पहले आर्किया आए होंगे और आर्किया और बैक्टीरिया काफी सिमिलर स्ट्रक्चर और काफी इनमें सिमिलैरिटीज पाई गई है, बट जेनेटिकली जीन के स्टडीज के आधार पर ये देखा गया है कि बैक्टीरिया के जीन्स और आर्किया के जीन्स में रिलेटिवली या कंपैरेटिवली ज्यादा डिफरेंसेस हैं इन कंपैरिजन टू आर्किया एंड यूकैरियोटा. So finally, it has been presumed that leuca is the common ancestor, that is the latest universal common ancestor of life, from which this is the internal node. On this internal node level, two divergent lines must have been erosion. One has gone to evolve into the bacteria group. These are the different bacteria group, and another group has evolved given two branches. First is archaea group and second is the eukaryota. So archaea and bacteria, they have structurally resemble very much. That is, they are having almost prokaryotic structure. एक cellular protein, एक cellular boundary है जिसके अंदर RNA और DNA के materials हैं, जबकि eukaryotes में ये boundary, इस cellular boundary के अंदर nucleus भी evolve हो गया है जहाँ पर DNA के structures बने हैं. So this is, in very short, we can say the domain, the universal common ancestor from which the life might have been originated in due course. So let us see, this leuca is a concept of evolutionary biology where this living beings are descendant of a unique ancestor commonly referred to as the last universal common ancestor leuca of all life on Earth according to modern evolutionary biology. This is not the first life on Earth. This is not thought to be the first life on Earth, rather the latest that is ancestral to all current existing life, lived about 3.9 billion years ago. 4 बिलियन अरब 4 अरब साल पहले जो लाइफ था उसका कंसेप्ट के बारे में अब जाना गया. अराउंड 150 years ago इस ल्यूका के कंसेप्ट को इवॉल्व किया गया है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये इतना पुराना हुआ होगा एवोल्यूशन, बट इसके बारे में जाना गया है अराउंड 150 years ago. और उसके बाद से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, वेरी सरप्राइजिंगली एक भी एक्सपेरिमेंट ने इस कंसेप्ट को नहीं रिजेक्ट करने की कोशिश की है. ऑल द एक्सपेरिमेंट्स दे हैव सपोर्टेड दैट the leuca is the universal common ancestor, जिसको universally it has been accepted, जो करीब 4 billion year ago exist किया होगा लाइफ पे. It discovered in Western Australia, and it has gone through an evolutionary process. Was first proposed by British naturalist Charles Darwin in the concluding sentence of his 1859 book on Origin of Species. So this is the history of this common ancestor. Now, this history has been supported by a number of facts. बहुत सारे evidences इस theory के support में लिए गए हैं. From the molecular basis, DNA के का semi-conservative replication, DNA RNA के self-replicating फॉर्म, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेटिंग फॉर्म, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने का फॉर्म, प्रोटीन डीएनए आरएनए के मैसेज से उन प्रोटीन का के अमाइनो एसिड्स कलेक्ट होकर के प्रोटीन के फॉर्म्स बना रहे हैं थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. So this was the molecular explanation of this
एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ल्यूका मॉलिकुलर लेवल पर भी, मॉलिकुलर बेसिस पे भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए और ये देखा गया कि शिरीशिया ई कोलाई जिसको कहते हैं शिरीशिया कोलाई, दैट इज द वेरी प्रिमिटिव बैक्टीरिया, उसका जीनोम और एक एलिफेंट या हायर मैमल का जीनोम में ये सिमिलैरिटी जो देखी गई है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि similarities, there are so much similarities between the basic genome structure or the genetic phylogeny of the, or the evolutionary molecular evolutionary trend was so much resembling. Of course there are differences, genes का number में difference है, genes के amino acids के sequence में, proteins के types में difference है, genes के types में difference है, but that maybe it is proposed during the evolutionary trend on the different pathways when we will see the phylogenetic tree, किस तरह से ये जो gene के structures and proteins के types of structures and how they are related with the evolution of the life after the appearance of the leuca might have been taken. Here, as we have seen, different lines पे ल्यूका से divergent lines पे different species, these are the different species or the found on the external nodes. These are the external nodes, these ultimate nodes are the external nodes and these are the internal nodes जहाँ से branching and rebranching हो रही है. तो इस तरह से rooted and derooted phylogenetic tree बनते हैं. Rooted tree के common ancestor हैं, non-rooted trees में common ancestor नहीं है. So like that there are so many special characteristics of leuca that one by one you can go through these points and for your notes. But basic evidences and our next explanation I'll see. We will see the basic evidences through which the concept of leuca has been confirmed that this is the leuca which is a common universal common ancestor. And last means का मतलब है यहाँ पे latest जो सबसे ज्यादा जिसको find out किया गया है कि this is the common ancestor, and the evidences has been given very interestingly from the every practical branch of the biology, that is from the paleontology, from the branch of molecular biology, then from evolutionary evolutionary history or evolutionary details through the micro and macro evolutions, the theory has been supported. Then from anatomy, from morphology, from embryology, developmental biology, then ontology, that is the study of fossils, paleontology, all these branches are surprisingly not a single branch is rejecting or contradicting the theory of this leuca. So this is very interesting. However, now these are the two theories. एक और theory IIT 2005 में that has been given, that has shown the multi level ancestry, but कई तरह के horizontal genes gene transfer की वजह से this theory has shown that the many horizontal gene transfers implying multiple possible origin of these three domains. Here again the domains, the broadly accepted domains are three only: bacteria, archaea and eukaryotes. But instead of a common leuca theory, ये जो leuca की theory है उसकी जगह पे ये accept किया गया था कि horizontal gene transfer technology की वजह से इन तीनों की origin के base में जो molecular reason है, that may be not of a single ancestral story, but that may have gone through multiple possible origin. However, this theory has been again accepted as a modification or to some extent modified form of this leuca only. Now it is universally accepted. leuca के बारे में कैसे leuca का origin हुआ होगा, leuca से life किस तरह diverse हुई होगी,
उसके बारे में 1794 में चार्ल्स डार्विन के ग्रैंडफादर इरास्मस डार्विन ने कहा था कि हो सकता है एनिमालिटी जो आई, जो डेवलप लाइफ के ओरिजिन होने के बाद प्लांट्स के ओरिजिन हुई, माइक्रोब्स की ओरिजिन हुई और एनिमल्स की ओरिजिन हुई। तो एनिमल्स की ओरिजिन की वजह बहुत सारे वजह हो सकती हैं, इरिटेशन, सेंसेशन, वॉल्यूशंस, associations, then hybrid formations, interspecific जो reproductive associations बने तो hybrids के formation हुए, and then so on and so forth, अलग अलग तरह के speciations होते गए, नई नई species की origin हुई और इस तरह से एक evolutionary history बनी है। Now let us see some of the common evidences, the most important evidences that that are confirming this theory of this LUCA, the universal common ancestry theory. That the first evidence comes from biochemistry. The all life forms are based on fundamental biochemical organization, genetic information encoded in DNA, transcribed into RNA through the effect of protein and RNA enzymes, translated into proteins by ribosomes with ATP, NADP. These are the reducing agents, and the glycolysis appears, and the energetic changes take place. The respiration takes cellular respiration. Through the cellular respiration, ATP is produced and stored. So these were the biochemical proofs of the molecular level. At the molecular level, these were the proof that energy sources, these ATP were used as energy sources, NADPH used as energy sources. And in this way, even in E. coli, this was the theory of transcription, translation, protein formation, the protein formation or protein encoded through the DNA and RNA enzymes. Then analysis of small sequences, differences in widely shared substances such as cytochrome C, ये एनर्जी ट्रांसफर एटीपी के फॉर्मेशन के दौरान जब एटीपी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मैकेनिज्म से जब एटीपी का कन्वर्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बाइंड किया जाता है. So these all mechanisms have been found that they are very much identical in the very previous prokaryotes like the Escherichia coli, as well as in the highest form like the man. So these some 23 proteins are found in all organisms serving as enzymes carrying out core functions like DNA replication. So the types of proteins, the nature of proteins, and 20 types of amino acids, all these biochemical substances and the biochemistry and the molecular chemistry support molecular level supports this LUCA hypothesis. Now this is 6,331 genes common to all living animals have been identified, and they may have been arisen from a single common ancestor that lived 650 million years ago in pre-Cambrian. So then another evidence came from the common genetic code. Genetic code, you know, it comes in triplets that identify, that picks up the amino acids, combines it, and then the protein synthesis takes place through the process of transcription and translation, that is messenger RNA from DNA picks the amino acids and binds with the ribosomal RNA. So that genetic code is again from bacteria to archaea to animals to and plants. It is very much identical, supporting this view. Then selectively neutral similarities, बहुत सारे छोटे छोटे और भी बहुत सारे similarities इस view को support करती हैं, come from two areas, amino acid sequences and DNA sequences. Any irrelevant similarity between sequences is evidence from common descendant. Protein with same three-dimensional structure need not have identical amino acid sequences. Any irrelevant similarity between sequence is evidence from common as descendant. So descendant and ancestor, you understand. Ancestor is the पूर्वज and descendant जो एक common ancestor से आगे के जो forms बने हैं, they are the descendants. So there is a lot of connectivity or the similarities between the different groups after the LUCA has given the descendants groups. So these the evidences we are looking about that. These are so many similarities. Include energy carrier adenosine ATP formation, that all amino acids found in protein are left-handed.
There is evidence from homology of central subunits of transmembrane ATPases throughout all living organisms, especially how the rotating elements are bound to the membrane. So these are the molecular arrangement of the proteins, amino acids, and DNA and RNA molecules, and their working is very much similar in the lower form prokaryotes also, and in the eukaryotes also, supporting the evidence of evolution of life from a common ancestor, that is the universal common ancestor we can do. Then another field is the fossil. Fossils are very important evidences of standing in support of this leuca, that is the common ancestor, and that fossils, you know, the imprints, the skeletal imprints found on the ancient rocks, and these fossil records are very clearly, बहुत सारे species के कई कई चीज, जैसे man का evolution का, man का रेप्टिलियन एंसेस्ट्री की, बर्ड की रेप्टिलियन एंसेस्ट्री की, तो बहुत ही क्लियर कट विदाउट एनी डायरेक्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे फॉर्म से या कुछ कॉमन कैरेक्टर्स वाले फॉर्म से दूसरे डिसेंडेंट्स बने हुए हैं, फॉर्मिंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर दैट so this is the fossil record also have got very important proof of this evolution, that is from the lower forms the higher forms have evolved. That is, then it comes out, the fossil record has given rise a very clear picture of the evolution, how in the ancient time the evolution happened, must have happened through this macroevolution, refers to large scale changes, and microevolution to small scale changes that have been given rise to the new species. Then again, the fossils also show that in the various periods, in the archaeological study also stands very much important here, that it has been seen that some in very ancient, in some time must have been mass extinction, also extinctions also, that is the records have been observed of many lives which are not yet now observed, and that may be result of mass extinction or different types of extinctions. So these are the paleontological or the fossil record evidences and the evidences from the evolutionary history. Now, from the evolutionary point of view, the last but not the least, the very important proof of this leuca, that is the universal common ancestry of origin of life, is supported with this phylogenetic tree. This phylogenetic tree, इसके बारे में हम details आपके syllabus में लिखा हुआ है concept. इसका details हम किस तरह से इसको construct numerically phylogenetic tree से numericals कराया जा सकते हैं, but I'll see कि आपके syllabus में क्या है, but phylogenetic tree इसी एक क्लास में कंप्लीट करना संभव नहीं है. It is but a very interesting topic. This is a phylogenetic tree. इसके पहले भी के वीडियोस में भी हम phylogenetic tree देख चुके हैं, जब हम systematics कर रहे थे, जब हम taxonomy कर रहे थे, जब हम biological classification कर रहे थे, that all the living specimen, all the living things, they are having their phylogenetic or evolutionary history from where they have come from and from where they have gone through. Ancestors कहाँ हैं इनके और descendants कहाँ हैं इनके. And this phylogenetic tree is created in a very unique way that we will see in the next class. This is the phylogenetic tree of life as a whole. This is the phylogenetic tree of life, we can say. This life, this phylogenetic tree shows that it has been published by in 2010 by Douglas Theobald and many scientists. This phylogenetic tree has been created and supported by a number of scientists, and this theory, these trees have been built using morphological methods such as appearance, embryology, anatomy, anatomical evidences, skeletal evidences, सारे यूज किए गए हैं phylogenetic tree के. और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री है का प्रिंसिपल ये है कि एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे लिया गया, विच में भी, जैसा अभी हम देख चुके हैं, विच में भी लूका, दैट इज एन यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिससे ये दिस इज हियर में भी दिस इज द ट्री
here will be the root. That root अभी हमने देखा कि जीन की वजह, जीन accumulation से हुआ होगा, RNA DNA बने होंगे, पॉलीमराइजेशन शुरू हुआ होगा, DNAs आए होंगे, उसके बाद सेल बना हुआ होगा, यहाँ से पॉलीमराइजेशन बन शुरू हुआ होगा, सेल लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे, प्रोकैरियोट्स बने होंगे, उसके बाद यूकैरियोट्स बने होंगे, और इस तरह से इवोल्यूशन शुरू हुआ होगा। जहां पर एंसेस्ट्री bifurcation शुरू होता है, that is these are called as the nodes. Now in phylogenetic tree I will take completely another class, that maybe this tree may be rooted, this tree may be explained on the basis of the rooted phylogenetic tree, non-rooted phylogenetic tree, then this tree जब बनता है तो इसके जो स्पीसीज हैं, इनकी जो ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग होती है वो किस तरह से होती है, दीज आर द नोड्स। नाउ दीज आर द इंटरनल नोड्स, जहाँ पर ब्रांचिंग, एक पेड़ है, पेड़ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, हर ब्रांच ये रूट है, यहाँ पे स्टेम है, दीज आर द नोड्स। These nodes, they are again divided into branches and rebranches, and then these are the external nodes, जहाँ पर टर्मिनेट हो रही है ट्री के ब्रांच कह सकते हैं, द टर्मिनल नोड्स आर द एक्सटर्नल नोड्स। देन अगेन द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचिंग ऑफ अ ट्री एंड ब्रांचिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री इज दैट फाइलोजेनेटिक ट्री में यू मस्ट बी लुकिंग, ये 90 डिग्री के बेसिस पे all these lines, all the divergences are taking on the at an angle of 90 डिग्री, राइट एंगल पे ये हो रहे हैं। और ये बड़े छोटे जो लाइंस दिख रहे हैं, these larger and smaller line and closer and distant lines are showing the levels of similarities and dissimilarities between them on the genetic basis, on the phylogenetic basis, on the anatomical basis, on the fossil record basis, ये different basis पे ये similarities and dissimilarities के basis पे ये छोटे और बड़े lines हैं। So phylogenetic tree I'll take in one more class for phylogenetic tree. This is the common, these are some of the common features of a phylogenetic tree that shows the different characteristics, and this family tree shows the three domain concept. The three important domains are largely when we have done in our प्रीवियस स्लाइड, जब हमने सिस्टमेटिक्स किया था और टैक्सोनॉमी किया था, तो हमने देखा था कि थ्री किंगडम हाइपोथेसिस वी हैव सीन, जिसके बेसिस पे द लाइफ हैज बीन originated from a common ancestor on three ways, three domain system, the bacteria, the archaea, and the eukaryota. The previous, according to the one view, this Luca might have evolved on two ways. On the one was the prokaryotic type and another is the eukaryotic type. This eukaryotic base has been, before going into the eukaryotic termination, it has diverged into another group, that is the archaea, that resembles to great extent with the prokaryotes or bacteria. This is the bacteria branch. Now, on the genetic level, on the molecular level, on the gene level, these bacteria and archaea are resembling very much, but they are differing also very much. But the second divergent line, on one hand it has given to archaea, and on other hand it has given to eukaryotes, that is the multicellular organism. So with this today's class is completed. I think ल्यूका क्या है, यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर क्या है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, और फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ है क्या, this must have been become clear to you with a number of evidences and facts. And in the next class, we will see the phylogenetic tree of life and the three domain concept. So thank you. Do like, subscribe, and share the channel, and press the bell icon to get notification about the upcoming video. Thank you. Thank you so much. I hope it must be useful to you.